So what we discussed yesterday was like about this particular definition. So push down automata, where we said that like if at all a push down automata is to be defined, then that push down automata is defined using 7 tuples: Q, sigma, tau, delta, Q0, Z0, F, where Q is set of states, sigma is set of input symbols, correct? Then tau is set of push down stack symbols or push down or stack symbols. These can be pushed and or popped from the stack. Okay, that's what our assumption is. Okay. Okay, Q0 would be initial state. Q0 belongs to capital Q. Z0 is initial stack symbol, which is always present initially in the stack. F is set of final states, and delta is a transition function mapping from Q cross sigma union epsilon, because we saw in yesterday's example there could be possibility of epsilon 2 cross 2. So this is a triplet gives Q cross 2 star. So like we took one example where we said like a language we took was a raised to n, b raised to n, where n was greater than or equal to 1, and we took this a raised to n, b raised to n example, okay, where we tried designing a PDA. So we took this string as an example case, a raised to 3, b raised to 3, okay, and we assumed that this tape is one-ended open, one end closed, right? So we wrote Q0AR. So we designed the logic in the sense like for every A that is occurring on the tape, we are going to push a blue plate, okay, and whenever we find small b on the tape, so we popped all blue plates. That's what our assumption. So initially, what are the Z0 we were talking about with respect to this definition? Okay, we are assuming for all examples that we will be talking, almost all examples, we are going to assume that R would be our push down symbol, start push down symbol. And so we did what? So we took a stack. Say I will take again a stack here for sample understanding. This would be a stack for us. So we are assuming that there would be R as initial stack symbol. Fine. So we took example of a raised to 3, b raised to 3, and epsilon. So we initially assumed that Q0 would be our initial state. Correct? Q0 would be our initial state. So like Q0AR. So what are the tape symbol that I have A? So initially my state is Q0A, and at the top of the stack there is R. So for occurrence of A, we changed this state to Q1, and we added blue plate here. Similarly, then state was Q1. Next symbol was A, correct? Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So Q1 A, and at the top we saw B. So we again applied this transition function nextly defined. So we kept Q1 as it is. We pushed blue plate on the stack again. So we got third A. So A, Q1, A, and B. So we applied again push operation for blue. So we were remaining in Q1. Now we got B, Q1, B, B, Q1, B, B. So Q1, B, B. So we applied the state change operation Q2.
and we popped this element from the stack. Now your top of the stack is this, state is Q2, next symbol is B, Q2 small b capital B on the stack. So Q2 small b capital B. So we again popped, we remain in the same state. Then we saw again Q2, this last B and B. So Q2 BB again pop. Now this string ended, so we assume that towards the end of the string there would be epsilon, correct? So Q2 epsilon and at the top R, so we entered into QF. So this would be the kind of PDA that we are supposed to design. So this would be our PDA, and we may give description about each of these elements, like what is Q, what is sigma, and so on. So now to demonstrate this, there is a notation called instantaneous description, okay, which we haven't discussed yesterday, but now I'm introducing that. So ID is a normal notation to indicate how a PDA computes or processes input string and works out to make decision about string acceptance or rejection. So string accept हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें प्रूव करना जब होगा, करेक्ट? जो पीडीए हम दे रहे हैं, यहाँ पर जो पीडीए दिया हुआ है, ये जो पीडीए था हमारा, वो अगर हमें प्रूव करना है कि भाई ये हमने जो पीडीए बनाया इस लैंग्वेज के लिए, तो ये इस जैसा स्ट्रिंग जो इस सेट में फिट हो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा. जो नहीं होगा उसको नहीं बोलना चाहिए, जो होगा उसको हाँ बोलना चाहिए. सो उसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे तो. अभी ये जो आईडी है ये रिप्रेजेंट होता है ट्रिपलेट के, QWX would be a triplet, where Q is current state, W is input string or remaining input string, and X is stack contents represented as string with top of stack as first symbol in the string. Correct? So एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर और उसके लिए ये नोटेशन यूज करेंगे. सो एग्जाम्पल अगर देखा तो ऐसे लिया मैंने इस केस में. सो जैसे हमने पीडीए अभी लिखा Q0 AR, Q1 BR, Q1 AB, Q1 BB, Q1 BB, Q2 epsilon. So ये push, pop, don't take any action on the stack. So only process the stack. Correct? That's what we did. Now, when we move towards processing the string, we have a raised to 3, b raised to 3 as accepted by PDA. So we have to prove this. So how exactly you do this? So I'm using the ID triplet, similarly the way that we defined above. So current state will be Q0. Okay, we wrote this string A, B, R. Correct. Gives, like, now we are going to make use of this notation. Now this would be current state, current symbol under read head, and top of the stack. So we had A and R, so we took action. So this will move to next. So this is processed. So this we are going to remove that A and we'll keep remaining A, B there. Okay. और इस A की वजह से हमने एक्शन क्या लिया था, ब्लू को पुश किया था, करेक्ट. सो यहाँ पर ये ब्लू आ गया BR. अभी नेक्स्ट, अभी करंट स्टेट है आपका Q1, करंट सिंबल है A, stack में है B. So Q1 AB. So if I take Q1 AB here, we say Q1 BB. So Q1 अभी ये प्रोसेस हो गया तो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचा हुआ यहाँ पे लिखा A BBB और यहाँ पर B जो था, so we added, we pushed one more blue plate, so we got BBR. Again, current state is Q1. We process this, top of the stack is B. So we are going to push BBR. So one blue plate is pushed. So Q1 now अभी current state है Q1. Current symbol under read head is blue, B, small b, and top of the stack is blue plate. So जैसे ही ये situation आएगा, so we always said that for this kind of example that we are going to pop. So that's what we wrote there, Q1 BB. So we popped it. So we will be writing like we are going to remove this B. Now remaining string would be BB, and as we pop this, remaining elements of the stack would be BBR. Same case Q2 current set. अभी ये रीड हेड के अंदर B है, यहाँ पर टॉप ऑफ दैट स्टैक ब्लू है. सो अगेन एक्शन टेकन, रिमेनिंग इज B, ये B रिमूव किया. सो Q2 BR. सो Q2 BB फिर से. सो वी अगेन पॉप्ड इट. सो वी गॉट Q2 एप्सिलॉन R. Q2 एप्सिलॉन R के बाद हमने ये लिखा था Q2 एप्सिलॉन R के बाद QF एप्सिलॉन R. सो दिस वुड बी स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस. यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स और ऐड किए हुए. सो व्हिच स्टेट दैट नॉट एक्सेप्टेड, accepted or rejected. So A raised to 3, B raised to 4. We straightforward can say that this doesn't fit into this language, but we have to show that. So Q0 अभी फिर से वो string लिख लिया, A raised to 3, B raised to 4, R. So Q1 अभी ये अगर A प्रोसेस हो गया तो रिमेनिंग क्या था,
2 ए थे और 4 बीस थे, उनको लिख लिया, यहाँ पर बी आर लिखा। अभी ये प्रोसेस फिर से हो जाएगा। सो करंट स्टेट वुड बी Q1 ए बी, सो Q1 बी बी आर, वो ए को प्रोसेस कर दिया। फिर से रिमेनिंग ए, उसके लिए भी पुश कर दिया। तो अभी Q1 करंट स्टेट, 4 बीस बचे हुए टेप पर, और ये 3 ब्लू प्लेट्स जो आपने पुश किए हुए। सो अभी बी बी, तो इसके लिए पॉप ऑपरेशन है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग था बी बी बी, वो लिख लिया, स्टेट चेंज हो जाएगा Q2, और यहाँ पे बचा हुआ था ये बी बी आर। अभी Q2 बी बी, फिर से उसको रिमूव किया, तो यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पर एक बी आर आ गया। फिर से Q2 बी बी, उसको पॉप कर दिया। अभी ये सिचुएशन आया Q2 बी आर नॉट एक्सेप्टेड एज ट्रांजिशन फंक्शन नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ओके, वैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है A⁴ B⁴। अभी इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके 4 एज है, 3 बीस है, करेक्ट? उनके लिए कैसे करेंगे, फिर से Q0 ट्रिपल ए, सॉरी 4 टाइम्स ए, और उसके बाद ट्रिपल बी आर। सो वो प्रोसेस किया पहला ए, तो यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, करेक्ट? फिर से ए बी, 2 ए बचे, 3 बीस बचे, 2 ब्लू हो गए, करेक्ट? नेक्स्ट एक ए बचा, 3 बीस हो गए, क्योंकि 3 ए हमने प्रोसेस अभी ये प्रोसेस कर लिए, बिकॉज हमारे पास 4 एज थे, इसलिए 3 ए प्रोसेस हो चुके, इसलिए ब्लू प्लेट्स आ गई थी। अभी ये और भी, फिर से ये था, तो इसलिए 4 ब्लू प्लेट्स हो गए यहाँ पर, करेक्ट? और उसके बाद Q2 को पॉप करना है अभी यहाँ पर, तो Q2 बी बी, तो पॉप कर लिया। यहाँ पे 3 ब्लू प्लेट्स बचे, यहाँ पर 2 बी बचे, फिर से पॉप किया, सो एक बी यहाँ पर बचा, 2 ब्लू यहाँ पर बचे, फिर से पॉप किया, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आया, लेकिन एक ब्लू प्लेट वैसे ही रहा, तो Q2 एप्सिलॉन बी, वी डोंट हैव दिस फंक्शन डिफाइंड हियर, राइट? सो अल्टीमेटली दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, रिजेक्टेड एज ट्रांजिशन फंक्शन नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? यस सर। एनी क्वेश्चन?